हेलो गाइस, नया एक वीडियो में स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बी फार्म प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को लेके। बी फार्म पीवाई को बी फार्म प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को लेके तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ए टैक्सोन इज, ऑप्शन इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, ऑप्शन बी ए टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन सी ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, ऑप्शन डी ए टैक्सोनॉमी ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी इज करेक्ट, ए टैक्सोनॉमी ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग। ए टैक्सोनॉमी ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग। क्वेश्चन 1 के लिए ए टैक्सोन इज ए टैक्सोनॉमी ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग। Question 2, energy flow in an ecosystem is unidirectional, bidirectional, multidirectional, all of these. Unidirectional. Option A is correct. Energy flow in an ecosystem is unidirectional. Next question. Which of the following organisms completely lack cell wall? Completely lack cell wall. They are smallest living cell known. They are smallest living cell known and can survive without oxygen. Option is euglenoids, slime molds, mycoplasma, all of these. Correct option is option C, mycoplasma. Mycoplasma is the only organism, only नहीं है और भी होगा, लेकिन mycoplasma completely lacks cell wall or smallest living cell known and can survive without oxygen. Option C is correct. Next question. A pea plant parent having violet colored flowers with unknown genotype was crossed with a plant having white colored flowers. In the progeny, 50% of the flowers are violet, 50% are white. The genotypic constitution of the parent having violet colored flowers was. इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी इज करेक्ट, हेटेरोजाइगस। तो इसको देखते हैं पहले कैसे हुआ। इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, क्वेश्चन ने बोला वायलेट कलर्ड फ्लावर्स, वायलेट कलर्ड फ्लावर्स एंड वाइट कलर्ड फ्लावर्स को अगर क्रॉस किया जाए, वायलेट कलर का फ्लावर्स एंड वाइट कलर फ्लावर्स को अगर क्रॉस किया जाए, इसका 50% प्रोजनी प्रोड्यूस होगा वायलेट। इसका 50% प्रोजनी प्रोड्यूस होगा वायलेट एंड 50% प्रोजनी प्रोड्यूस होगा वाइट। तो हम लोग को निकालना है, जेनोटाइप बताना है हम लोग को जेनोटाइप बताना है वाइट कलर वायलेट कलर्ड फ्लावर्स का जेनोटाइप बताना है। तो क्वेश्चन में दिया है वायलेट कलर्ड फ्लावर्स, वाइट कलर्ड फ्लावर्स। अगर पीपेलेंट के लिए वाइट कलर्ड फ्लावर्स जो होता है ये रेसेसिव होता है, रेसेसिव जीन होता है, स्मॉल बी एंड पीपेलेंट के लिए वायलेट कलर्ड जीन होता है डोमिनेंट कैपिटल बी एंड हेटेरोजाइगस कैपिटल बी स्मॉल बी। अगर इस जेनोटाइप को अगर क्रॉस किया जाए एक साइड में कैपिटल बी इंटू स्मॉल बी, सिंगल गैमेट दोनों होमोजाइगस है, अगर इसको कैपिटल बी स्मॉल बी F1 प्रोजेनी, वायलेट है बीबी वायलेट। नेक्स्ट है 2 कैपिटल बी स्मॉल बी इंटू रेसेसिव जीन स्मॉल बी। अगर इसको क्रॉस किया जाए कैपिटल बी स्मॉल बी
capital B, small b, small b, small b. ये है वायोलेट, वायोलेट, ये है वायोलेट एंड रेसेसिव इज वाइट, ये है वाइट. तो टोटल प्रोजेनी 2 है. यहाँ देखेंगे तो टोटल प्रोजेनी 2 है. वन इज़ वायोलेट फ्लावर एंड नेक्स्ट प्रोजेनी में वाइट कलर आता है. वन इज़ वायोलेट एंड नेक्स्ट इज़ वाइट. नेक्स्ट प्रोजेनी में वाइट कलर आता है. तो पेरेंट जिसमें वायोलेट कलर आता है, पेरेंट है जिसमें वायोलेट कलर आता है, वो है हेटेरोजाइगस. पेरेंट जिसमें वायोलेट कलर आता है वो है हेटेरोजाइगस. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी इज करेक्ट, हेटेरोजाइगस. नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको फिर से आप लोग देखिएगा, ये पीछे जाके फिर से और एक बार देखिएगा, शायद आप लोगों को समझ में आ जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन 5. The beginning of understanding genetic transformation in bacteria was made by. Option is Watson and Crick, T.H. Morgan, Frederick Griffith, Hershey and Chase. Option C is correct, Frederick Griffith. The beginning of understanding genetic information in bacteria was made by Frederick Griffith. Option C is correct. Next question C. Cell respiration is carried out by. Option is chloroplast, Golgi bodies, ribosome, mitochondria. Option D is correct, mitochondria. Cell respiration is carried out by mitochondria. Next question. A recessive mutant is one which is, option is not expressed, rarely expressed, expressed only in heterozygous state, expressed in both homozygous and hemizygous state. D is correct. A recessive mutant is one which is expressed in both homozygous and hemizygous state. Next, question 8. The source of Taq polymers used in PCR is a. Option is mesophilic fungus, thermophilic fungus, thermophilic bacterium, and halophilic bacterium. Option C is correct. The source of Taq polymers used in PCR is a thermophilic bacterium. Next question. Correct order of the stages of cellular respiration. सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा स्टेज करेक्ट है और ऑर्डर करेक्ट है? ऑप्शन इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज, क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज, क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकोस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज. इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी इज करेक्ट, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज. What is the correct order of the stages of cellular respiration? Option D is correct, glycolysis, Krebs cycle, electron transport change. Next, question 10. Who proposed the 5 kingdom classification and named kingdom Monera, Protista, Fungi, Plenty and Animalia? Option is Carolus Linnaeus, Carl Weiss, R.H. Whitaker, Herbert Copeland. Option is C is correct, R.H. Whitaker. R.H. Whitaker, who proposed a 5 kingdom classification and named kingdoms as Monera, Protista, Fungi, Plenty and Animalia. Option C is correct, R.H. Whitaker. Next question. Hemoglobin is, option is a protein used as a food supplement, an oxygen scavenger in root nodules, a plant protein with high lysine content, an oxygen carrier in human blood. Option D is correct, an oxygen carrier in human blood. Hemoglobin is an oxygen carrier in human blood. Next, question 12. Which of the following induces parturition? TSH, thyroid stimulating hormone,
GH ग्रोथ हार्मोन, बेजोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a mixture containing DNA fragments A, B, C and D with molecular weights A, B, C, A larger than B and D larger than C was subjected to aqueous gel electrophoresis. The position of these fragments from cathode to anode, size of the gel would be. अगर इन्फॉर्मेशन को देखें, A plus B equal to C, A larger than B and D larger than C. A प्लस बी का जो साइज है ये कंबाइन करके फ्रेगमेंट सी का समान होता है। A प्लस बी का जो साइज है ये साइज कंबाइन करके फ्रेगमेंट सी का समान होता है। और नेक्स्ट जो है A लार्जर देन बी, बी से A बड़ा है, एंड D लार्जर देन सी, सी से D बड़ा है। तो इसका जो अगर इसको अगर देखें तो A प्लस बी इक्वल टू सी, ए प्लस बी इक्वल टू सी, इसमें A एंड B जो है ये सी से छोटा है। इसमें अगर देखें तो A प्लस बी सी से छोटा है, तो ऑप्शन अगर बी को देखें सी से छोटा होगा, ए बी सी से छोटा है ए एंड बी, तो सी से पहले बैठेगा ए नहीं तो बी बैठेगा सी से पहले। तो देखते हैं, बाद में बोला है ए लार्जर देन बी, ए लार्जर देन बी बोला है, ए लार्जर बी से ए बड़ा है, बी से अगर ए बड़ा है तो सी से पहले ए बैठेगा, इसके पहले बी बैठेगा, तो बी सबसे छोटा है और डी इज़ लार्जर देन सी, सी के बाद डी बैठेगा। तो ये अभी सीरीज बन गया बी ए सी डी, स्मॉलेस्ट बी इज स्मॉलेस्ट and D is largest. Next question. Question 14. Okazaki is known as for his contribution to the understanding of, option is DNA replication, mutation, translation, transcription. Option A is correct, DNA replication. Okazaki is known for his contribution to the understanding of DNA replication. Next question. Fluid mosaic model of plasma membrane was given by. Fluid mosaic model of plasma membrane किसने दिया था? रॉबर्ट हुक, रॉबर्टसन, सिंगर एंड निकोलसन, गॉर्टर एंड ग्रेंडेल. Correct option is option C, Singer and Nicholson. Fluid mosaic model of plasma membrane Singer and Nicholson ने दिया था. Next question. If pea plants having red dominant colored flowers with unknown genotypes are crossed, 75% of the flowers are red होगा, 25% are white. The genotypic constitution of the parents having red colored flowers will be. Option दिया है 1 homozygous and other heterozygous. Option B both homozygous. Option C both heterozygous. Option D both hemizygous. So two pea plants having red colored flowers with unknown genotype are crossed. अगर red flower is dominant, capital R, and white color flower is recessive, small r.
अगर टू अननोन जेनोटाइप को अगर क्रॉस की जाए, अननोन टू अननोन जेनोटाइप को अगर क्रॉस की जाए, अगर इन दोनों अननोन जेनोटाइप को अगर क्रॉस की जाए, देखते हैं आर 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 आर, इसके अंदर बैठेगा आर 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 आर। वन आर जो है कैपिटल आर होमोजाइगस डोमिनेंट, वन आर इज होमोजाइगस डोमिनेंट एंड टू आर कैपिटल आर स्मॉल आर ये टू हेटेरोजाइगस, ये दोनों हेटेरोजाइगस है। ये कैपिटल आर ये होमोजाइगस डोमिनेंट है एंड स्मॉल जो है होमोजाइगस रेसेसिव है, होमोजाइगस रेसेसिव। तो एक होमोजाइगस रेसेसिव है, एक होमोजाइगस रेसेसिव है। तो अगर ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, वन होमोजाइगस एंड अदर हेटेरोजाइगस। वन होमोजाइगस बना है स्मॉल आर, होमोजाइगस रेसेसिव बना है, वन होमोजाइगस रेसेसिव बना है एंड अदर थ्री होमोजाइगस डोमिनेंट बना है। वन होमोजाइगस डोमिनेंट एंड टू आर is heterozygous. Next question. Direction 17 to 21. This question consists of two statements such each printed as assertion and a reason. Answering this question, you are required to choose any one of the following 5 reasons. चार ऑप्शन दिया हुआ है। If both assertion and reason are true and reason is correct, explanation of assertion. B. If both assertion and reason are true but reason is not, correct explanation of assertion. If assertion is true but reason is false. D. If both assertion and reason are false. Next question 17. Assertion and reason दिया हुआ है। एसर्शन का मतलब कॉटन दिया हुआ है। साइटोक्रोम ऑक्सीडाइज एंजाइम कंटेन कॉपर, सायोनाइड कंबाइंस विद द कॉपर ऑफ साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंड प्रिवेंट्स O2 कंबाइनिंग विद इट। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी इज करेक्ट। इफ बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 18. एसर्शन वॉक्सी एंड क्यूटीन कोटिंग ऑन प्लांट पार्ट्स रिड्यूस द ट्रांसपिरेशन। रीजन दिया हुआ है दिस एडप्शन आर फाउंड इन ज़ेरोफाइट्स। ऑप्शन इसके लिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ये दोनों एरर का ए बी दोनों करेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट assertion 19. Sequence is the time when age associated defects are manifested. Senescence is the time when age associated defects are manifested. Assertion reason दिया हुआ है certain genes may be undergoing sequential switching on and off during one's life. करेक्ट है ऑप्शन ए इज करेक्ट इसके लिए। इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ए इज करेक्ट इसके लिए 19. नेक्स्ट क्वेश्चन 20. असर्शन दिया हुआ है कॉटन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन पेशेंट्स आर गिवन इम्यून सप्रेसिव ड्रग्स। रीजन दिया ट्रांसप्लांटेड टिश्यू हैज एंटीजेंस व्हिच स्टिमुलेट द स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स ऑन द रेसिपिएंट। इसके लिए ए करेक्ट होगा, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट एंड
जो assertion दिया हुआ है इसके लिए जो रीजन दिया हुआ है दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21। assertion दिया हुआ है डार्क बिल्ड पेलिपाइटस एंड स्पाइनी एंड anteater both are egg laying animals yet they are grouped under mammals. रीजन दिया है both of them have given cervical vertebrae and 12 pairs of cranial nerves. इसके लिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। बोथ आर करेक्ट बट जो assertion क्वेश्चन दिया हुआ है इसके लिए जो रीजन दिया हुआ है ये रीजन करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। given below is one of the types of ecological pyramids this type represent. Option is pyramid of energy in an ecosystem, energy pyramid in a spring, pyramid of biomass in a lake, pyramid of numbers in a grassland. Option C is correct, pyramid of biomass in a lake. Given below one of the types of ecological pyramids, इसके लिए ऑप्शन सी इज करेक्ट, pyramid of biomass in a lake. Next question 23. Genetic diversity in agricultural crops is threatened by. Genetic diversity in agricultural crops is threatened by intensive use of fertilizer, extensive intercropping, intensive use of biopesticides, introduction of high yielding varieties. इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटीज. Genetic diversity in agricultural crops is threatened by. Option D is correct, introduction of high yielding varieties. Given below diagram, नीचे दिया हुआ एक डायग्राम है, लेफ्ट हैंड लिम्ब as seen in front of if the certain mistakes labeling दो wrongly मैच है उसको देखते हैं. फर्स्ट देखते हैं, ये है फीमर, बड़ा वाला है फीमर, ये है फीमर एंड ये बीच वाला ये है पेटिला एंड ये बड़ा वाला है टिबिया एंड छोटा वाला है फेबुला और नीचे में जो दिया हुआ है टार्सल एंड फेलेंजेस, नीचे में जो दिया हुआ है 7 टार्सल है, 7 टार्सल्स होता है. उसके बाद मेटाटार्सल्स होता है 5 होता है. उसके बाद फेलेंजेस होता है, फेलेंजेस 14 होता है. तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन है फेबुला एंड फेलेंजेस, ऑप्शन बी इज करेक्ट. ऑप्शन बी इज करेक्ट. फेबुला छोटा वाला है, बड़ा वाला टिबिया है एंड छोटा वाला फेबुला है. फ्लेंजेस जो है, जहाँ फ्लेंजेस दिया हुआ है वो फ्लेंजेस नहीं है, वो मेटाटार्सल है. फ्लेंजेस जो है जो सामने वाला उसके बाद जो है आएगा वो फ्लेंजेस आएगा, बीच में मेटाटार्सल आएगा एंड मिडिल में जो है वो है 7 टार्सल है. टार्सल, मेटाटार्सल एंड फ्लेंजेस 14. नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question 25. Next question 25. Which one of the following 4 glands is correctly matched with accompanying description? Option is pancreas delta cell of the isolates of Langerhans secrete a hormone which stimulated glycolysis in liver. Option B, parathyroid secretes parathormone which promotes movement of calcium ions from blood into bones during calcification. Next, option C, thymus starts undergoing atrophy after puberty. Next question, option D, thyroid hyperactivity in young children causes cretinism. इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी इज करेक्ट, thymus starts undergoing atrophy.
Option C is correct. Which one of the following four glands is correctly matched with accompanying description? Option C is correct. Thymus starts undergoing atrophy after puberty. Next, the Cre-Do chart. The Cre-Do chart syndrome is caused by change in chromosome structure involving. Question 26. The Cre-Do chart syndrome is caused by change in chromosome structure involving option is inversion, duplication, translocation, deletion. Option D is correct, deletion. Next question. Which one of the following groups of structures organs have similar function? Option is nephridia in earthworm, Malpighian tubules in cockroach, urinary tubules in rat. Option A is correct. Which one of the group of structure organs have similar function? क्वेश्चन में बोला है ग्रुप्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड ऑर्गन्स हैव सिमिलर फंक्शन. ऑप्शन ए इज करेक्ट. Nephridia in earthworm, Malpighian tubules in cockroach, and urinary tubules in rat. Next question. Electrophoresis. Electrophoresis procedure involves. Option is opening of stomatal pores during night by artificial length, making transient pores in the cell membrane to introduce gene constructs, purification of saline water with the help of a membrane system, fast passage of food through sieve pores in the phloem elements with the help of electric stimulation. Option B is correct. Electrophoresis procedure involves making transient pores in the cell membrane to introduce gene constructs. Next question. 29. Many cells function properly and divide mitotically even though they do not have. Option is plastid, mitochondria, plasma membrane, cytoskeleton. A is correct. Plastid. Many cells function properly and divide mitotically even though they do not have plastids. Option A is correct. Next, question 30. Which one of the following events is correctly matched with time period in normal menstrual cycle? Option is endothelium secretes nutrients for implementation of 11 to 18 days. Option B, endometrium regenerates 5 to 10 days. Option C, release of egg 5th days. Option D, rise in progesterone level 1 to 15 days. Option B is correct. Endometrium regenerates 5 to 10 days. Which one of the following events is correctly matched with the time period in a normal menstrual cycle? Endothelium. Option B is correct. Endothelium regenerates 5 to 10 days. Next question. Which one of the following statement pertaining to pollutants is correct? Option is excess fluoride in drinking water causes osteoporosis. Methyl mercury in water may cause ethy disease. Excess cadmium in drinking water causes blackfoot disease. DDT is a non-biodegradable pollutant. Option D is correct. Which one of the following statement pertaining to pollutant is correct? DDT is a non-biodegradable pollutant. Option D is correct. Next question 32. The first movement of the fetus and appearance of hair on its head. First movement of the fetus and appearance of hair on its head are usually observed during which month of pregnancy? Option is 5th month, 6th month, 3rd month, 4th month. Option A is correct, 5th month. Next, question 33. Secretion from which one of the following are rich in fructose, calcium, and some enzymes? Secretions from which one of the following are rich in fructose, calcium, and some enzymes? Option is
liver, pancreas, salivary, male accessory glands. Option D is correct, male accessory glands. Secretions from which one of the following are rich in fructose, calcium, and some enzymes? Option D is correct, male accessory glands. 34. Question 34. The eyes of the potato tuber are shoot buds, flower buds, root buds, auxiliary buds. Option D is correct, auxiliary buds. The eyes of the potato tuber are auxiliary buds. Next question 35. The arrangement of the nuclei in normal embryo sac in dicot plant is. इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी इज करेक्ट. तीन सेल माइक्रोप्लियर एंड में रहता है. माइक्रोप्लियर तीन सेल माइक्रोप्लियर एंड में रहता है. माइक्रोप्लियर MI माइक्रोपाइलर की एंड में रहता है 3 सेल और 2 पोलर न्यूक्लियाई. सेंट्रल 2 पोलर न्यूक्लियाई सेंट्रल सेल में रहता है. 2 पोलर न्यूक्लियाई सेंट्रल सेल में रहता है एंड 3 सेल एट द कैलाजेल 3 सेल कैलाजेल की एंड में रहता है. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. 3 + 2 + 3. Next question 36. What kind of evidence suggests that man is more closely related with chimpanzee than with other hominoid apes? Option is comparison of chromosome morphology and anatomy, evidence from DNA extracted from sex chromosome and autosomes, comparison of chromosome morphology only, evidence from fossil remains and the fossil mitochondrial DNA alone. Option B is correct. इसके लिए evidence from DNA extracted from sex chromosomes and autosomes. Next question 37. Oldest fossil belongs to which of the following group of plants and animals? Option is blue-green algae, rhodophyceae, phaeophyceae, Stereoidy. Option A is correct, blue-green algae. Oldest fossil belongs to which of the following group of plants and animals? Blue-green algae. Option A is correct. Next, question 38. Which of the following is important for growth and synthesis of protoplasm? Option is nucleus, nucleolus, mitochondria, chloroplast. Option A is correct, nucleus. Nucleus is important for growth and synthesis of protoplasm also. Next, the nucleolus is rich in option is protein, carbohydrate, DNA, RNA and protein. Option D is correct. Nucleolus is rich in RNA and protein. Next, question 40. Which one of the following is a sesamoid bone? Pelvis, patella, pterygoid, pectoral girdle. Option B is correct. Patella. पेटिला फीमर के बाद और टिबिया फेबुला के बीच में मिडिल में रहता है. पेटिला is a sesamoid bone. Next, question 41. In history of biology, Human Genome Project lead to the development of biosystematics, bioinformatics, biotechnology, biomonitoring. Option B is correct, bioinformatics. In history of biology, Human Genome Project lead to the development of bioinformatics. Next question. Which one of the following pairs of codon is correctly matched with their function or the signal for the particular amino acid? Option A is GUU, guanine, uracil, guanine, cytosine, uracil, alanine. Option B is correct. Uracil, adenine and guanine, uracil, guanine and adenine stop. Option B is correct. Next, question 43.
Which of the following isotopes is the most dangerous to Homo sapiens? Option A is iodine 131, strontium 90, caesium 137, D phosphorus 32. Option B is correct, strontium 90. Next question 44. Crossing over in diploid organism is responsible for. Option A is crossing over in diploid organism is responsible for. Option A, dominance of genes. Option B, linkage between genes. Option C, segregation of alleles. Option D, recombination of linked alleles. Correct option is option D, recombination of linked alleles. Crossing over in diploid organism is responsible for recombination of linked alleles. Next question. An example of competitive inhibition of an enzyme. An example of competitive inhibition of an enzyme is the inhibition of. Option A is correct, succinic dehydrogenase by malonic acid. Question 45. An example of competitive inhibition of an enzyme is the inhibition of. Option A, succinic dehydrogenase by malonic acid. Next 46. Azolla. Azolla is used as a biofertilizer because it. Question 46. Azolla is used as a biofertilizer because it. Option A, multiplies very fast to produce massive biomass. B, has association of nitrogen fixing rhizobium. C, has association of nitrogen fixing cyanobacteria. D, has association of mycorrhiza. Option C is correct. Has association of nitrogen fixing cyanobacteria. Azolla is used as a biofertilizer. Option C, used to has association of nitrogen fixing cyanobacteria. Next, which one of the following pairs is correctly match? कौन सा ऑप्शन करेक्टली मैच है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, mycorrhizal mineral uptake from soil. 48. The source of somatostatin is same as that of. Option is thyroxine, calcitonin, insulin and glucagon, somatotropin and prolactin, vasopressin and oxytocin. Option B is correct, oxytocin and glucagon. The source of somatostatin is same as that of insulin and glucagon. Next question 49. Just as a Xenophysla is to Yersinia pestis, so as. Just as Xenophysla is to Yersinia pestis, so is. Option D is correct. इसके लिए for question 49, just as Xenophysla is to Yersinia pestis, so is Phlebotomus to Leishmania donovani. Option D is correct. इसके लिए question 50. Drinking of mineral water with very low levels of pesticides, about 0.02 to ppm for long periods may. Option is produce immunity against mosquito, cause leukemia in most people, cause cancer of the intestine, lead to accumulation of pesticide residues in body fat. Option D is correct, lead to accumulation of pesticide residues in body fat. Drinking of mineral water with very low levels of pesticides for long periods may leads to accumulate pesticides residues in body fat. Next question 51. Nucleosome core is made of. Option B is correct, H2A, H2B, H3 and H4. न्यूक्लियोसोम कोर जो होता है, ये न्यूक्लियोसोम कोर composed of an
octometer of histone protein. Nucleosome core composed of an octamer of histone protein. ऑक्टामर इसलिए बोला जाता है टोटल 8 मॉलिक्यूल से प्रोटीन को बनाता है ऑक्टामर हिस्टोन प्रोटीन। ऑक्टामर इसलिए बोला जाता है क्योंकि टोटल 8 मॉलिक्यूल से प्रोटीन कोर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52. Which one of the following depresses brain activity and produces feeling of calmness, relaxation, and drowsiness? Option is Valium, hashish, morphine, amphetamines. Option A is correct, Valium. Which one of the following depresses brain activity and produces feeling of calmness, relaxation, and drowsiness? Option A is correct, Valium. Next question 53. Ethanol is commercially produced through particular species of. Option C is correct, Saccharomyces. Ethanol is commercially produced through a particular species of Saccharomyces. Next question. मैच द डिजीज कॉलम 1 कॉलम 2 में जो डिजीज दो है उसको मिलाना है, तो कौन सा मिला के कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? एमीबायोसिस। A to एमीबायोसिस यूज ओनली स्टेरिलाइज्ड फूड एंड वाटर। डिप्थेरिया DPT वैक्सीन, डिप्थेरिया के लिए DPT वैक्सीन, डिप्थेरिया वैक्सीन। एंड सी के लिए कॉलेरा के लिए 4 यूज ओरल रिहाइड्रेशन थेरापी, साइफेलिस। ऑप्शन सी के लिए ट्रिफोनेमा पेलिडाम। ऑप्शन सी इज करेक्ट 54 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 55. Which one of the following immunoglobulins is found as a pentamer? Option A, immunoglobulin M. Immunoglobulin M is correct. Immunoglobulin M is found as a pentamer. Next question 56. Which one of the following is related to humoral immunity? B lymphocyte, T helper cell, T lymphocyte, T cytotoxic cell. Option A is correct, B lymphocyte. Which one of the following is related to humoral immunity? Option A is correct, B lymphocyte. Next question 57. In the immune system, interferons are a part of cellular barriers, cytokinin barriers, physical barriers, physiological barriers. Option B is correct, cytokine barriers. In the immune system, interferons are a part of cytokine barriers. Next question 58. The bactericidal protein present in human tears is. Bactericidal protein present in human tears is. Option is opsin, lysozyme, transducin, retini. Option B is correct, lysozyme. The bactericidal protein present in human tears is a lysozyme. Question 59. Which one of the following is not a phagocytic cell? Option is monocyte, basophil, neutrophil, macrophage. Option B is correct, basophil. Basophil is not a phagocytic cell. Neutrophil, monocyte, macrophage is a phagocytic cell. Basophil is not a phagocytic cell. Next question. Restriction enzymes. Option is are endonuclease which cleave DNA at a specific sites, make DNA complementary to an existing DNA or RNA, cut or join DNA fragments. D are required in vectorless direct gene transfer. Option A is correct,
restriction enzyme. Restriction enzymes are endonucleases which cleave DNA at specific sites. Question 61. The phase of menstrual cycle in humans that lasts for 7 to 8 days is follicular phase, ovulatory phase, luteal phase, menstruation. Option B is correct, ovulatory phase. The phase of menstrual cycle in humans that lasts for 7 to 8 days is ovulatory phase. Option B is correct. Next, question 62. cDNA is clone DNA, circular DNA, recombinant DNA formed by CBR transcriptase. Option D is correct, formed by CBR, formed by reverse transcriptase. cDNA is formed by reverse transcriptase. Question 63. Which of the following is correctly matched? Option D is correct. Agrobacterium tumefaciens is correctly matched with tumor. Agrobacterium tumefaciens is correctly matched with tumor. Option D is correct. Next question. Plasmid are, option A is integrated within host DNA without replication ability. Option B, extra chromosomal DNA which can self-replicate. Option C, DNA carrying genetic sequence without expressing H. Option D, none of the above. इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी इज करेक्ट, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए व्हिच कैन सेल्फ रेप्लिकेट. Extra chromosomal DNA which can self-replicate. Next question. 65. Largest gene in man is option B, dystrophin. Largest. 65. Question 65. Largest gene in man is dystrophin. Option D, B is correct. Next question 66. Early stage of human embryo distinctly possesses. Option is gill slits, external ear, pinna, and eyebrows. Option B is correct, gill slits. Early stage human embryo distinctly possesses gill slits. Next question 67. Endangered species. An endangered species confined to run of Kutch. Option is wild ass, wild dog, wild cat, lion. Option A is correct, wild ass. An endangered species confined to run of Kutch is wild ass. Next question. Viroids have option is single standard RNA not enclosed by protein code. Option A is correct. Viroids have single standard RNA not enclosed by protein code. Question 68. Viroids have single standard RNA not enclosed by protein code. Next question 69. Benzene is a, option is solid pollutant, gaseous pollutant, both solid and gaseous pollutant, none of the above. बेंजीन जो है ये गैसोलिन, ये लिक्विड पोल्यूटेंट है. गैसोलिन से एमिट होके लिक्विड पोल्यूटेंट जो है वो बेंजीन है. उसके वजह से लंग्स कैंसर भी होता है. बेंजीन इज़ ए लिक्विड पोल्यूटेंट एमिटेड फ्रॉम गैसोलिन और इसका कारण से लंग्स कैंसर भी होता है. 70. बोथ कॉर्पस luteum and macula lutea are found in human ovaries, a source of hormones characterized by yellow color, contributory in monitoring pregnancy. Option C is correct, characterized by a yellow color. Both corpus luteum and macula lutea are characterized by a yellow color. Next question 71. Photochemical smog formed in congested metropolitan cities mainly consist of. Option is ozone, peroxy, acetyl nitrate and NOx, smoke, peroxyl, acetyl nitrate and SO2, hydrocarbons SO2 and CO2, hydrocarbons ozone and CO2, SOx. इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए इज करेक्ट, ओजोन, peroxy, acetyl nitrate and NOx. Next question. Photorespiration in C3 plant
C3 plants start from phosphoglycerate, phosphoglycolate, and option C glycerate, option D glycine. Correct option is option B, phosphoglycolate. Photorespiration in C3 plants start from phosphoglycolate. Next question 73. In which one of the following habits does the diurnal temperature of soil surface vary most? Option is forest, shrubland, grassland, desert. In which one of the following habitats does the diurnal temperature of soil surface vary most? Correct option is option D, desert. Next question. About 70% of total global carbon is found in. About 70% of total global carbon is found in. Option is forest, oceans, grassland, agroecosystem. Option B is correct, oceans. About 70% of total global carbon is found in oceans. Next question. Which of the following is not a functional unit of ecosystem? Is not a functional unit of ecosystem. Option is productivity, energy flow, decomposition, stratification. Option D is correct, stratification. Stratification is not a functional unit of ecosystem. Productivity, energy flow, decomposition is a functional unit of ecosystem. तो ये था टोटल 75 क्वेश्चन 2014 का ये बायोलॉजी का 75 क्वेश्चन था. थैंक्स फॉर वाचिंग.